Hello dear students, in last lecture meaning of combination is completed. Now today we'll write the some list of formula or some result for the combination. So simple formula for the combination is NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n माइनस आर फैक्टोरियल. ये सिंपल फॉर्मूला जो हर एक में यूज होगी. अब सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है. सपोज एन सी ज़ीरो फर्स्ट है. एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू वन. जब एन सी ज़ीरो वैल्यू ऑफ आर इज ज़ीरो तो आपका आंसर वन आएगा. देखते हैं विथ फॉर्मूला. NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r out of bracket factorial. Here value of n is n, c value of r is 0. So n factorial divided by value of r 0 factorial n minus 0. Now next n factorial. 0 factorial means answer is 1. n minus 0 यानी क्या हुआ n factorial. n factorial by n factorial, your answer is 1. Prove that. Okay, clear. Now next another result. Second, NCN is equal to also 1. जब एन सी एन वैल्यू ऑफ एन एंड आर बोथ आर इक्वल, आंसर इज 1. देखो एन सी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इन ब्रैकेट एन माइनस आर आउट ऑफ ब्रैकेट फैक्टोरियल. हियर वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो एन. सो एन सी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n factorial in bracket n minus n factorial. n factorial divided by n factorial n minus n 0 factorial. Your answer is 1. n factorial by n factorial, answer is 1. 0 factorial means 1. 1 by 1, answer 1. Yes, prove that. NCN, your answer is 1. Now next, NC1 is equal to n. Third result, NC1 is equal to, your answer is n. Write the formula. NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r out of bracket factorial. Value of r is 1, so NC1 n factorial divided by 1 factorial in bracket n minus 1 out of bracket factorial. n का decreasing order step, n factorial n minus 1, so n minus 1. ओके, n माइनस वन आई डिनोमिनेटर कट करने के लिए, तो वहाँ पे हम स्टॉप हो जाते हैं. n माइनस वन फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, बोथ द कट. योर आंसर इज n. 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, n बाय 1, योर आंसर इज n. सो NC1 रिजल्ट हो, आपका आंसर क्या आएगा? n. नाउ नेक्स्ट, NC n minus 1 is equal to n. NC n minus 1 is equal to n. देखिए सपोज n 8 हो तो 8c 8 minus 1 यानी कि 7, तो भी आपका आंसर क्या आएगा बोले? n. देखते हैं. राइट द फॉर्मूला.
NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r out of bracket factorial. Now next, NC value of r is n minus 1 n factorial, value of r n minus 1 factorial, n minus n प्लस 1 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फैक्टोरियल n in bracket n minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. N cut, your answer is 1 factorial cut. So prove that NC n minus 1 also your answer is n. Prove that. And last some important result, NCR is equal to NC n minus r. NCR is equal to NC n minus r. Prove that. Check करते हैं result. So write the formula. NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r out of bracket factorial. Here value of r n minus r. NC n minus r is equal to n factorial divided by n minus r factorial in bracket n minus n plus r factorial. Okay, minus minus plus. So n factorial divided by n minus r, n cut r factorial. तो किसकी फॉर्मूला n फैक्टर डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टर इंटू r. हमारी मेन फॉर्मूला ये देखो, सिर्फ r मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ही चेंज है. NCR हो गया. प्रूव दैट NCn माइनस r इज इक्वल टू NCR. इस सभी सम फाइव सम इम्पोर्टेंस जो रिजल्ट है वो यूजफुल फॉर का शॉर्टकट मेथड आपको आंसर राइट करने के लिए यूजफुल है. ये चलो अंत चालू. ओके, तो फाइव क्या है, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो यूजफुल होगी हमें शॉर्टकट ट्रिक आंसर राइट करने के लिए. नहीं तो फिर मेन फॉर्मूला से तो आंसर आ जाएंगे सभी के. ओके, now we'll start the illustration number 16. So question number 1, find the 8C3. Now second, number 2, 20C3. Next, number 3, 5C4.
4 and number 4 6c6। ओके, जो एक सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दी है वो भी आप राइट कर देना। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इंटू एन सी वाई मीन्स इट दैट एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, जो आपके टेबल में दी हुई है। ओके, लास्ट में फर्स्ट 8c3 फाइंड आउट, यानी कि 8 की 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप। तो विथ फॉर्मूला किस तरह से आंसर आएगा देखते हैं पहले। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n minus r out of bracket factorial. Here value of n is 8, value of r is 3, so 8 factorial divide by 3 factorial in bracket 8 minus 3 out of bracket factorial. 8 minus 3 8 means 5 factorial, न्यूमरेटर में 5 factorial तक जाएंगे। 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 3 factorial, that means 3 into 2 into 1 into 5 minus 3, sorry 8 minus 3 5 factorial, 5 5 cut, 3 to the 6, 8 into 7, your answer is 56। okay, now next the second 20c3, write the formula NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial. Value of n is 20, c value of r is 3, 20 factorial divided by 3 factorial in bracket 20 minus 3, 20 minus 3 means 17, so numerator को हम 17 तक लेके जाएंगे। 20 into 19 into 18 into 17 factorial divided by 3 into 2 into 1 into 17 factorial, 17 17 cut, so using calculation 20 into 19 into 18 divided by 3 to the 6, 1140. Now next NC4, NC4 it means NC n minus 1 is equal to n, सम रिजल्ट इम्पोर्टेंट आपको पता था, इसका आंसर 5 आएगा। ओके, देखो write the formula NCR is equal to n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial. Value of n 5, value of r 4, so 5 factorial divided by 4 factorial in 5 minus 4 factorial, so 5 into 4 factorial divided by 4 factorial, 5 minus 4 1 factorial, 5 by 1 बोला था मैंने। यदि आपको सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट पड़ता हो NC n minus 1 ही है ये, तो क्या हो जाता, डायरेक्टली आंसर आप राइट कर सकते हो 5। एंड लास्ट N6C6 इट मीन्स NCN, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। NCR n factorial divided by r factorial in bracket n minus r out of bracket factorial
Here n and r both the value are same, 6 is 6. So 6 factorial divide by 6, 6 minus 6 factorial, 6 factorial cut, 1 by 0 factorial. Answer is 1. बोला था NCN, so answer is always 1. Okay, here completed illustration number 16. Next, illustration 17. If NC2 is equal to 45, find the value of N. Okay. NC2 is equal to 45, then find the value of N. आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो और विथ फार्मूला. देखो विथ फार्मूला NCR is equal to N factorial divided by R factorial in bracket N minus R factorial. Okay. Next, value of N. See, R is 2. N factorial divided by 2 factorial in bracket N minus 2 out of bracket factor. NC2 value of 45. So N के decreasing order में step N minus 1, N minus 2 factorial. Here 2 into 1 in bracket N minus 2 factorial cut. 2 denominator opposite multiplication. So 45 into 2 is equal to N in bracket N minus 1. 90 is equal to N in bracket N minus 1. चलो 19 के कैसे फैक्टर्स निकालोगे. आपका आंसर 2 consecutive वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 90. 9 into 10. So 10 in bracket 10 minus 1. चलो n की प्लेस पे क्या वैल्यू है. अपोजिट साइड 10. Therefore value of n is 10. इस तरह से फाइंड करेंगे. नेक्स्ट, illustration 18. If 3 into 2nc3 is equal to 44nc2, then find the value of n. Okay, value of n find out. First of all, I write down 3 into 2nc3 is equal to 44 into nc2. Then find the value of n. तो n फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2nc3 के 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेप राइट डाउन. 3 in bracket first 2n, next 2n minus 1, next
2n minus 2 कॉम्बिनेशन है, सो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 44 इन ब्रैकेट n के 2 स्टेप n माइनस 1 बाय 2 इंटू 1. So here 3 first of all cut, 2 cut. Here 22 to the 44. So now remaining step write down n in bracket 2n minus 1. Here common 2, so in bracket also n minus 1 is equal to 22 in bracket n in bracket n minus 1. चलो both sides same value n minus 1 n minus 1 कट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर्स में आएंगे. सो रेस्ट ऑफ वैल्यू राइट डाउन, 2 मल्टीप्लीकेशन अपोजिट साइड डिनोमिनेटर 2n minus 1 is equal to 22 by 2. जो 2 है मल्टीप्लीकेशन अपोजिट साइड डिनोमिनेटर्स में चला गया. 2n minus 1 is equal to 11. Minus 1 opposite side plus 11 plus 1. 2 multiply opposite side denominators 12 by 2. Therefore value of n is 6. Okay. Now next in illustration number 19. जो मैंने बोला था आपको एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन और एक्स इज इक्वल टू वाई. वही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करेंगे. देखो इफ एन सी एन माइनस 3 इज इक्वल टू 56, एन सी एन माइनस 3 इज इक्वल टू 56, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. मैं बोला था एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू हम एन सी आर ले सकते हैं. ओके, सो हियर एन सी एन माइनस 3 इज इक्वल टू एन सी 3 विथ रूल्स एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर. इस हम ले सकते हैं रूल्स नंबर 5 सम इम्पोर्टेंस रूल्स में. तो यहाँ पे वही वैल्यू थी तो हमने एन सी 3 ले ली. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, एन सी 3 इज इक्वल टू 56 हो गया. सिंपल, राइट द फॉर्मूला एन सी आर n factorial divided by r factorial in bracket n minus r factorial. So nc3 n factorial divided by 3 factorial in bracket n minus 3 factorial. nc3 की वैल्यू क्या है 56, n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial divided by 3 into 2 into 1 into n minus 3 factorial. So n minus 3 factorial cut, 3 to the 6 multiplication here, 56 into 6 is equal to n minus 1 n minus 2. So using calculation 56 into 6 336 n minus 1 n minus 2. 3 कंसिक्यूटिव वैल्यूज फाइंड करो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 336 हो. 6 into 7 into 8. Yes, so write down 8 minus 1 8 minus 2 is equal to n minus 1
n-2. सो n की प्लेस पे क्या वैल्यू है 8. सो अवर वैल्यू ऑफ n इज 8. देखो चेक कर सकते हो आप, जहाँ पे n है और एक प्लेस पे क्या है 8. हियर कंप्लीट है इलस्ट्रेशन नंबर 19. Illustration number 20. If NC4 is equal to NC6, then find the value of n. मैंने बोला NCX is equal to NCY, जो हमारी फॉर्मूला थी. So we know that if NCX is equal to NCY, then okay, two options are possible. X plus y is equal to n, and second x is equal to y. So first option, क्या हम लेते हैं x plus y is equal to n. So here NCX is equal to NCY. So value of x is 4, y is 6. 4 plus 6 is equal to n. N is equal to 10. And second option, x is equal to y. So your value of x is 4 and value of y is 6. 4 is equal to 6. 4 and 6 both are not same values. So our first option is the correct answer. Value of n is equal to 6, which is impossible. Impossible. Therefore, the value of n is equal to 10. 4 is equal to 6. यहाँ पे 6 is equal to 6 होता, 4 is equal to 4 होता. तो both the values are possible for n. Okay? ये आपको याद रखना है. NCX is equal to NCI. So two rules apply. X plus y and x is equal to y. देखो same. Next illustration number 21. If 50C R plus 2, 50C R plus 2 is equal to 50C 2R minus 3, then find the value of R. Okay, value of R find out. Same rules apply. So we know that NCX is equal to NCY. Then two possible option, x plus y is equal to n.
option 1. Okay, here value of x is r plus 2 plus value of y is 2r minus 3, and end both the place same 50 is given, plus r plus 2r, 1 plus 2 3r plus 2 minus 3 minus 1 opposite side plus, so 3r is equal to 50 plus 1, 51 by 3, r is 17. Okay, first value for the r. Second option write down, option 2, x is equal to y, value of x r plus 2 and value of r y 2r minus 3. माइनस 3 है उसको लेफ्ट साइड रहते, r है उसको राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, साइन चेंज। सो 2 plus 3 is equal to 2r minus r. Okay, 5 is equal to 1r, therefore r is equal to 5. And both the values are possible for this question. R is equal to 17 लेंगे तो 17 plus 2 19, 17 to the 34, 34 minus 3 31, 50 minus 19 31. ओके, आ गया 5 plus 2 7, 5 to the 10, 10 minus 3 7, दोनों से आंसर क्या आएगा? ऑलवेज इक्वल. नाउ नेक्स्ट इन 22, in a company, 2 male manager and 1 female manager are to be selected from 3 male manager and 2 female manager. Underline selected वर्ड्स. अभी तक क्या आता था? अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मीन्स P, परम्यूटेशन. यहाँ पे बोला है 2 male manager and 1 female manager are to be selected from 3 male and 2 female. यानी कि 3 मेल मैनेजर है उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है एंड 2 फीमेल मैनेजर है उसमें से 1 को सिलेक्ट करना है. मैनेजर फॉर ट्रेनिंग, हाउ मेनी वे दिस सिलेक्शन कैन बी डन? तो 3 में से 2 और 2 में से 1. सो टोटल कॉम्बिनेशन थ्री मेल मैनेजर में से 2 का सिलेक्शन एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड 2 फीमेल में से 1 फीमेल का सिलेक्शन करना हो. सो 3 into 2 by 2 into 1 into 2. सो 2 कट 3 2 जा 6. टोटल 6 वे हैं कि जिसमें हम ट्रेनिंग के लिए 2 मेल और 1 फीमेल मैनेजर को भेज सकते हैं. ओके, ये कंप्लीटेड इलिस्ट्रेशन नंबर 22. ऑल आउटकम्स आपको पिक्चर्स में दिए हुए टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो.